Hi guys, so thanks for joining again. Let's start this. So statistical mechanics चल रहा है हमारा, right? And what we are looking, few fundamental assumptions we have looked so far, or the most important assumptions in all these are that all states are equally probable, right? So the idea was पहली चीज तो ये है कि कोई quantum picture अभी तक तो I didn't introduce to you, right? But the point is, you are well aware of the quantum mechanical picture that the states of a system are basically comes in a discrete fashion. So जैसे कि यहाँ पे है, like you can see that the all states are these comes in a discrete fashion, right? They are not in a continuous phase, right? So you can define that like this is 1, 2, 3, and on so on. You can count them something like this, right? तो and also the idea is कि ये सभी स्टेट जो है ना they are equally probable. तुम ये नहीं कह सकते कि कॉइन जो है वो हेड में जाएगा या टेल में जाएगा. There is no biasness. They are all the time equally probable. So, and how do you define the probability for system in a particular state? Let's say S. So the probability will be something like, for this is like you want in particular state, and then there are total G states, so the probability will be 1 by G, right? That's the obvious thing, the way I mean favorable count divided by total number of counts, right? That's the way you define. This is favorable counts and this is total counts, right? That's the way you define probability. Now the sum of all probabilities is 1. That's also, you know, one thing. This is a basic definition of probability. And now you define the averages something like this, right? For any variable, let's say X, the probability will be defined as a product of XS and PS, right? This is a very fundamental thing. I mean, no Google or anything has been done yet. This is a very straightforward thing, straightforward definitions with some mathematical preliminaries, right? So let's grab this concept and move forward. अभी जो आगे का था कॉन्सेप्ट वो कुछ ऐसा है कि हाउ डू यू, सिंस वी आर डीलिंग विद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, राइट? तो वहां पर एक सिस्टम, दो सिस्टम या चार सिस्टम से काम नहीं चलता, राइट? बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर गोइंग टू मेक एवरेजेस, or you were going to ask that what is the most probable configurations and things like that, right? तो कहने का मतलब जैसे आपने नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स भी जो भी पढ़ा है, लाइक इन नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स यू कैलकुलेट मीन, राइट? यू कैलकुलेट median, you calculate mode and so on, right? And then you can say that my this sample is good or that sample is good and things like that. So तो हमें भी जो whatever the problem that we are formulating, we have to construct some sort of an ensemble for this problem to work on, right? तो वो बहुत important है कि how do you construct an ensemble, right? So let's look at in our statistical picture that how we can construct an ensemble by just looking by just solving a problem, right? So construct an ensemble consisting of 5 spins with a spin excess, let's say 2s equal to 1, right? Let's construct the ensemble something like this. With the condition is something we have 5 spins and the spin excess is 2s1. So you know that how the spin excess is defined. Spin axis is defined as a number of spin up minus number of spin. Go to the back lectures, right? I have covered this, right? This is basically spin axis, right? और ये spin axis कैसे defined है? जो number of up spin है, जो number of down spin है, उनको subtract कर दो, then there is a quantity called 2s, which is basically spin axis, right? तो अभी इस केस में जो कि हमारे साथ प्रॉब्लम है, जैसे हमारे पास 5 स्पिन्स हैं, राइट? तो let's say this is our system, right? System of 5 spins, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. तो ये 5 स्पिन का ये मेरा सिस्टम, ये सिस्टम था, राइट? Let's say let me write it down. So let's say this is my system. So S, मैंने इसको S बोला, ये मेरा सिस्टम है, राइट? अभी इस सिस्टम में मेरा कंडीशन ये है कि आई हैव 5 स्पिन्स दैट यू कैन ऑब्वियसली सी 1 2 3 4 5, और दूसरा कंडीशन ये है कि स्पिन एक्सेस 1 है. So you can see that how could you do that? You must have 3 spins up and 2 spins down to get the spin axis 1, right? Because you can see this one, and from this you can see that the 3, this should be 3, this should be 2 to have a spin axis 1, right? That's the way you can construct. So the multiplicity function that gives you the total number of states, right? That's the basic idea, right? So multiplicity function क्या होता है? That's वो हमने अभी तक जो लिखा वो GNS करके लिख देते, right? और n total number of particle and s is associated with the spin axis. कैसे 2s जो है वो spin axis होता है, right? तो ये आइडिया है, 2s spin axis है. So अभी आइडिया ये है कि
GNS G5 और हाफ, तो ये कितना n इस केस में कितना हो जाएगा, हमारे केस में 5 स्पिन है, और s कितना है, मल्टीप्लिसिटी फंक्शन स्पिन एक्सेस 2s1 है, राइट, तो ये हाफ हो जाएगा। तो G5 हाफ का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दिस विल बी जस्ट इक्विवेलेंट टू लाइक, अभी मैंने क्या बोला, 2 मस्ट बी डाउन एंड 3 मस्ट बी अप, तो चूजिंग आउट ऑफ 5, choosing 2, how many ways you can choose, you can choose 10 ways, right? So our system of 5 spins with a given condition that there should be a spin excess of 2, 1 must contain 10 identical system। समझ रहे हो मेरी बात, like अभी मैं एक ऐसा सिस्टम भी बना सकता हूं, just look at here, like 1 2 3 4 5, अभी ऐसा सिस्टम भी बना सकता हूं जिसमें ये अप है, ये डाउन है और ये अप है, राइट। इस तरह के मैं आइडेंटिकली 6 मतलब लाइक 10 सिस्टम्स बना सकता हूं, और वो 10 सिस्टम्स का जो कलेक्शन होगा, राइट, अगर एक बड़ा सा बॉक्स में यहाँ पर बना लूं ऐसे, तो 1 सिस्टम 2 सिस्टम 3 सिस्टम 4 सिस्टम एंड ऑन सो ऑन 10 सिस्टम, तो ये जो 10 सिस्टम का कलेक्शन होगा दैट विल कॉल्ड एन इंसेंबल, राइट। वो इसलिए क्योंकि क्या है कि वो बड़े से बक्से में क्या 10 आइडेंटिकली प्रिपेयर सिस्टम रखे गए हैं, और आइडेंटिकली प्रिपेयर का मतलब क्या है, दे शेयर सेम एनर्जी, हर सिस्टम की एनर्जी माइनस म्यू भी है, राइट, हर सिस्टम का स्पिन एक्सेस सेम है, नंबर ऑफ अप स्पिन सेम है, डाउन स्पिन सेम है, एंड ऑन सो ऑन, एंड टोटल नंबर ऑफ स्पिन ऑफ कोर्स कांस्टेंट है। तो these are some set of conditions which is given to you, which are given to you, on that basis you can construct ensemble, right? And what is ensemble? Ensemble is a collection of identically prepared large number of systems। ये पहला definition है, it's a very important definition। ensemble large number of collections choose कर लीजिए आप of identically prepared systems, and you put in a box and you call that box as an ensemble, right? So that's clear, right? It's very important definition। Now let's look at something very important, right? Let's look at if you have two sort of configuration। पहला सिस्टम कुछ ऐसा है जो कि U1 एनर्जी है, जिसका N1 नंबर ऑफ पार्टिकल है, एनर्जी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये इतने, एंड ये स्पिन एक्सेस है, राइट। इस केस में क्या है, ये एनर्जी है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और ये स्पिन एक्सेस है। सो पहले केस में आप देख रहे हैं कि मतलब लाइक फॉर सिस्टम 1, let's say this is 1 system, let's say this is 2 system। For system 1 we have U1 energy and 1 number of particles and S1 spin excess। For system 2 we have U2 energy and 2 number of particles and S2 spin excess। Now what will happen if you allow a thermal contact, right? Right now they are, I mean here they are basically isolated system, right? They have no connection at all। Now what we are doing here, we are just contacting them, we are connecting them through some way or some wall, और इस तरह से कनेक्शन होता है कि there is a distribution of energy, like मतलब पहले सिस्टम की एनर्जी कुछ रीशफल हो जाती है, दूसरे सिस्टम की एनर्जी कुछ रीशफल हो जाती है, रीशफल होकर U1 प्राइम हो जाती है, U2 प्राइम हो जाती है, बट द कंडीशन रिमेन सेम कि U1 प्राइम और U2 प्राइम को भी आप जोड़ेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना U1 और U2 को जोड़ने से मिला था, राइट। तो इसका क्या आइडिया है, इसका आइडिया कि टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, राइट। अभी अगर इस सिस्टम का एनर्जी आप लिखना चाहें तो वो एनर्जी सम ऑफ इंडिविजुअल सिस्टम का होगी, राइट, US1 US2 लिख सकते हैं, और वो कितना होगा इन ए मैग्नेटिक फील्ड -2 MbS1 2 MbS2 -2 MbS, where S is basically S1 plus S2, राइट। ये इतना तो आइडिया है ना कि टोटल एनर्जी ये होती है, राइट, जो मैंने पिछला भी बार बताया था, राइट। तो अभी देखिए, अभी हमें द प्रॉब्लम इज नाउ इफ यू and the total number of particles is something n1 plus n2, right? Now you want to write a multiplicity function। तो multiplicity function of the combined system क्या होगा, combined system का it will be just a product of individual, right, individual system। so ये पहले सिस्टम का मल्टीप्लिसिटी फंक्शन है, ये दूसरे सिस्टम का मल्टीप्लिसिटी फंक्शन है, n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, S1 स्पिन एक्सेस है जिसका ये फंक्शन है, राइट। सिमिलरली G2 भी n2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स और S2 बेसिकली विच इज S minus S1, और यहाँ मैंने S2 को S minus S1 इसलिए लिख दिया है कि ताकि so that I don't have to run this sum over here only over S1, right? तो इसलिए यहाँ S minus S1 है। तो ये let's say this is equation 1 is a combined। Now let's अभी एक क्वेश्चन ये मैं पूछता हूँ आपके पास, for two spin system in thermal contact what is the most probable configuration?
तो अभी मतलब मान लो कि दो सिस्टम को आपने मिक्स कर दिया, अभी एक सिस्टम कुछ सर्टेन स्टेट में था, एक सिस्टम दूसरे सर्टेन स्टेट में था। कहने का मतलब स्टेट का क्या मतलब, मान लो जैसे 5 स्पिन सिस्टम का हमने पहले बात किया, उसमें 3 स्पिन अप थी, 2 स्पिन डाउन थी, राइट। अभी 3 स्पिन ये अप, 2 स्पिन डाउन किसी भी कॉम्बो में हो सकती है, राइट। मैंने देखा 10 नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बोज मिले हमें जिसमें 3 स्पिन अप और 2 स्पिन डाउन हो सकती है, राइट। इसी तरह कोई दूसरा सिस्टम है जिसमें मान लो 10, मतलब मान लो कि 8 स्पिन अप है, टोटल 10 स्पिन है, 8 स्पिन अप है, 2 स्पिन डाउन है। अभी दोनों सिस्टम को मैंने मर्ज कर दिया, and I ask you the question that what will be the most probable configuration of these combined system. So the most probable configuration, you know that it will be the product of these two, right? वो तो पहले ही बात किया, G1 N1 इन दोनों का जस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन now let's look at, since we are interested in the statistical problem, right? तो assumption क्या है कि N1 is much greater than 1 and N2 is much greater than 1. और हमने देखा था कि ये multiplicity function when N1 is much greater than 1 and N2 is much greater than 1 can be approximated to a Gaussian function, right? तो Gaussian function like G1 N1 S को आप लिख सकते थे G1 0 exponential minus 2S1 square by N1, right? And similarly G2 and 2S2 को लिख सकते हैं G2 0 exponential minus 2S2 square N2, right? तो ये तो अब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो G1 0 G2 0 एक्सपोनेंशियल ऐड होके ये दे देगा, राइट। अभी इस फंक्शन को हमें मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन करना है, दैट मींस यू हैव टू फाइंड समवेयर द एक्सट्रीमम ऑफ दिस फंक्शन, राइट। ये फंक्शन है, इस फंक्शन का एक्सट्रीमम फाइंड आउट करेंगे, देन यू कैन गेस आउट द व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो अभी एक्सट्रीमम फाइंड आउट करने के लिए सिंस देयर इज एक्सपोनेंशियल दिस साइड, तो थोड़ा इजी होगा इसको कैलकुलेट करना इफ आई टेक लॉग ऑन बोथ साइड, राइट। तो इधर का लॉग ले लिया एंड इधर का लॉग ले लिया, दिस इज इक्वेशन 3, राइट। So now you notice that I just want to calculate the most probable configuration. So I want to minimize this function with respect to S1, let's say, because S1 is variable right here. तो S1 के रिस्पेक्ट में मिनिमाइज कर दिया तो मुझे ये कंडीशन मिलती है -4S1 by N1 plus 4S1 minus S2 equal to N. So this is a condition for extremum, right? But हमें नहीं पता ये extremum maximum है और minimum है। उसके लिए अगर आपको जानना है then you again derivative it. Second derivative is required. और second derivative करेंगे तो there will be a minus sign sitting here which shows that this is a maxima, right? So this will be a maximum. So most probable configuration this will be, right? So this is called maxima. So यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से condition क्या मिलेगी, for S1 by N1 equal to S2 by N2. So this is a condition for two combined system when comes in a close contact. The most probable configuration will be such that the spin axis for system 1 must be equal to the spin axis of system 2. समझ रहे हो ना। जैसे अगर 5 स्पिन वाला एग्जांपल याद है, उस केस में स्पिन एक्सिस मेरा क्या था, 2S1 था ना। अभी मैं कोई 8-10 स्पिन का सेट ले लूं तो उस स्पिन के केस में भी अगर दोनों को मैं मर्ज करूं तो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम कब होंगे, जब दूसरे केस में भी मतलब लाइक सिस्टम S2 के केस में भी 2S1 मिले। S1 के केस में तो 2S = 1 था ही, यहाँ पर भी 2S = 1 ही मिलना चाहिए। लाइक फ्रैक्शनल स्पिन एक्सिस जो है मस्ट बी इक्वल। दैट्स बेसिकली idea of thermal equilibrium or maybe most probable configuration. Let's not say this is thermal equilibrium. This is the condition for most probable configuration. अभी thermal equilibrium कैसे define करेंगे, right? For two system, let's say similar two system which we are talking previously. अभी total energy U1 plus U2 है और multiplicity function अभी यहाँ पर मैंने just multiplicity function को U1 और U2 के टर्म्स में लिख दिया है, where U1 is energy of first system and U minus U1 is energy of second system, right? तो एक्सट्रीमम इसी का भी निकालना है, that's what the point is. तो DG 0 होगा. Now this is a case of well-defined case of a partial differential. So partial differential I ask you to find out कि अगर G function है U1 U2 का और अगर I have to write perfect integral DG, how do you write a perfect integral? The answer is something like, first you have to differentiate with respect to U1 keeping G2 constant, then you have to keeping G1 constant and differentiate with respect to U2. This is equation 9 that you get after differentiating equation 8, right? तो अभी एक्सट्रीमम के लिए इसको क्या करना होगा, you know that U equal to U1 plus और du चूंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो du में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। दैट मींस du1 equal to minus du2, राइट। व्हाट दैट मींस, अब अगर du1 minus du2 प्रीवियस इक्वेशन 9 में बिठा देंगे इन द प्रीवियस स्लाइड, देन यू गेट द कंडीशन 1 by G1 dG1 by del and 1 by G2 del G2 by del G2.
अभी इसको मैं अगर इसके अंदर प्लग कर दूं तो इसको log g1 लिख सकता हूं, क्योंकि इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/g1 del g1 by del, मतलब ये सेम चीज मिल जाएगी जो ऊपर है, राइट, सिमिलर सेम चीज मिल जाएगी जो ऊपर है। तो अभी मैं एक क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी डिफाइन करता हूं जो है सिग्मा, जो है लॉगरिथमिक ऑफ मल्टीप्लिसिटी फंक्शन, राइट, और उसके टर्म्स में इस इक्वेशन 14 को लिख देता हूं। तो क्या होगा उसके टर्म्स में इक्वेशन 14? उसके टर्म्स में इक्वेशन होगी del sigma 1 by del u1 del sigma by del u2 at constant L1 and L2. This is a condition for thermal equilibrium, right? So, but this is a constant of thermal equilibrium. But the normal notion of thermal equilibrium is that अगर दो बॉडी हैं जो thermal equilibrium में है, तो अगर एक बॉडी टेम्परेचर T1 पे है और एक बॉडी टेम्परेचर T2 पे है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि दो बॉडी मस्ट बी come to a conclusive temperature, right? They must be come to a common temperature. तो वो क्या है कि दोनों का टेम्परेचर बैलेंस हो जाना चाहिए, T1 इक्वल टू T2। तो और मेरे यहाँ पर जो नॉर्मल नोशन निकल के आया वो del sigma 1 by del u1 del sigma 2 by del u2 है। तो that shows that कि this must be function of temperature, right? That this must be temperature, that's what it is, right? कि ये एक टेम्परेचर और ये दूसरी बॉडी का टेम्परेचर है, that's what it is, and but that temperature comes out in some fashion that it is a derivative of sigma 1 with respect to u1, or sigma 1 है log of multiplicity function. But the point is, you see that del sigma 1 by del, this is a number, right? Sigma 1 is a number and u is a dimension of energy, right? So there should be a multiplicity, there should be a proportionality constant, something like Boltzmann constant. When you multiply kb with t, you get the dimension of energy, right? So that you can balance right and left hand side by dimension wise. So your statistical physics में आपको temperature मिलेगा beta equal to kbt, which always comes in a dimension of energy, right? So that's what you must know, right? So let's stop it here for today's case, right? So thank you for joining, right? Thank you.